Hello students, I am your mentor. Come with the last topic of our Laplace transform, that is Laplace transform of integration. Guys, if you have any doubts in previous video, that is Laplace transform of derivative, please comment me. Or if you have any example that you know you are not it is not solved by you, then you can comment me that example or you can mail me that example. I will definitely give you solution of that example within 1 or 2 days. Now we move on the last topic of Laplace transform, that is Laplace transform of integration. So first we see the definition of Laplace transform of integration. In last video we see the Laplace transform of derivative. Now we move on the Laplace transform of integration. The definition of Laplace transform of integration is when we are taking Laplace of integration 0 to t f of u du is equal to, suppose they are asking Laplace transform of integration, right? That means here we are taking Laplace transform of integration. In last type we are seeing Laplace transform of derivative. So definition told us, okay, first find out the Laplace of phi of s and then just put out 1 upon s. In derivative we put s multiplication. Now here in Laplace transform integration we put s in the derivative in the division, right? So this is the definition. So according to the definition, first we are going to find out Laplace of u, that is f of t function or f of u function. Then we find out that is Laplace of f of u is phi of s. Then we are going to put Laplace of integration, that is 1 upon s only. So we are starting with the first example of Laplace transform. So हमारा पहला एग्जाम्पल है इंटीग्रेशन 0 to t sin u upon u du. Okay, this is the basic example we are taking. Now tell me guys, they are asking find Laplace transform of this term. Okay, तो आप मे भी यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो कि यहाँ पे इंटीग्रेशन है तो ये इवेल्यूशन का सम तो नहीं है. सी गाइज, दे आर आस्किंग फाइंड Laplace ट्रांसफॉर्म, दे आर नॉट आस्किंग इवेल्यूएशन. और सेकेंड थिंग, इवेल्यूएशन में अगर आप देखोगे तो इवेल्यूएशन में आता है एस to sorry 0 to infinity. They are asking in evolution the limits of integration is 0 to infinity. Here they are giving limit is 0 to t, right? So this is the basic difference between evolution sum and Laplace transform of integration, right? So tell me, when we compare what is the f of t here, or we call it the f of u. आपका कन्फ्यूजन दूर करने के लिए वी आर पुटिंग एफ ऑफ यू हियर. एफ ऑफ टी के बदले हम एफ ऑफ यू पुट करेंगे. तो व्हाट इज द एफ ऑफ यू? sin u divided by u, right? Now we are finding the Laplace of f of u. What is the Laplace of f of u? As we seen, Laplace of f of u, tell me guys, sin u divided by u. क्या कर सकते हैं बोलो? सिंपल है. देखो यहाँ पे अगर आपने ऑब्जर्व किया तो ये डिवाइडेड बाई u है, मतलब डिवाइडेड बाई t है, तो ये डिवीजन बाई t का प्रॉपर्टी में सॉल्व कर सकते हैं. एंड टेल मी व्हाट इज द Laplace of sin u. Laplace of sin u is 1 upon, because a is 1 here, s square plus 1. Okay, now divide by u. Divide by u means we are taking divide by u, that means we are taking integration, right? Multiplication of t में हम डेरिवेटिव लेते हैं, डिवीजन ऑफ t में हम इंटीग्रेशन लेते हैं. सो व्हाट इज इंटीग्रेशन? 0 to s to infinity 1 upon s square plus 1 ds, right? We are taking division by t property here, division by u or t, right? So tell me what is the integration of this 1 upon s square plus s square. As we know that formula is compared with the third part of integration. I am repeating one thing. Integration of 1 upon s is log s. Integration of s upon s square plus a square, it is we are adjusting derivative here. And third is 1 upon s square plus a square, we are putting here tan inverse, right? So tell me what is the tan inverse? It is a tan inverse s upon a. What is the s? S upon a is a 1, so it is not necessary to write down. And limits are s to infinity. Now put the upper limit. Upper limit put किया तो क्या होगा? Tan inverse infinity minus tan inverse s. Upper limit minus lower limit. Tan inverse infinity is nothing but it is a 45. No, it is a 90, right? So it is a pi by 2 minus tan inverse s, right guys?
Now 90 minus tan inverse we called as a cot inverse, right? So this is our Laplace of f of u, right? It is the Laplace of f of u, right? Now what is last step? Last step, when we take integration of f of u, what we do, 1 upon s, we just put 1 upon s cot इनवर्स s. मतलब आपको क्या करना है, लास्ट स्टेप में जब हम इंटीग्रेशन का लैप्लास लेंगे, दैट टाइम जस्ट पुट s इन द डिवीजन दैट सेट. ओके, जैसे हम डेरिवेटिव में s हम मल्टीप्लिकेशन पुट करते हैं, सिमिलरली वी पुट s in the division, so that's it. This is our final answer, right guys? This is the simplest example, basic example of Laplace transform of integration. So you can solve this example by taking pause in my video and see what are the steps I am covered. Now we move on the next example. Next example is, now we are taking some difficult example, that is Laplace transform of 0 to t u e raised to minus 3u cos square 2u du. Okay, this is our example, guys. This is this type of example mostly asked in your final exam. So this is your example. I'm just completing bracket here. Now guys, when we see the example, as there is a limit 0 to t, that means we are using last type of our Laplace transform, that is Laplace transform of integration, because it is 0 to t, right? That means ये evolution का sum नहीं है, 0 to t है, right? Now guys, what is the f of t, or we call it as the f of u? What is the f of u here? F of u is nothing but u e raised to minus 3u cos square 2u. आपने अगर ऑब्जर्व किया तो ये अंदर का जो टर्म है वो पूरा f of u होगा. तो f of u क्या होगा यहाँ पे? Whole term is f of u. Now we are taking Laplace transform. What is our first step? Laplace transform of f of u. So what is Laplace transform of u e raised to minus 3u cos square 2u? It is not necessary to write down du because we are not taking integration here. Okay, so what is the Laplace transform of this? As we know, first we are finding the cos square Laplace, then apply first shifting, then apply multiplication by t property. So tell me, what is the Laplace of cos square? Cos square का Laplace क्या होगा? Cos square का Laplace, we don't have Laplace of cos square, so I am just putting replacement of cos square. What is the replacement of cos square? It is a 1 plus cos 2 double na, so 2, that means it is a 4u divided by 2, right? Now 2 we are putting outside, so tell me, first we are putting the finding the Laplace of 1, then Laplace of cos 4u, then we are applying first shifting here, then applying multiplication by t. So step by step we solve the example. Tell me Laplace of 1, that is 1 upon s, plus Laplace of cos, that is s upon s square plus a square. What is the a? 4 square is the 16. Okay guys, now apply the first shifting here. What is the first shifting? First shifting by replacing s by s plus 3. Why s plus 3? Because it is a minus 3, so we are replacing plus 3, right? So s, we are putting s plus 3 here, again s is there, so s plus 3, again s is there, so s plus 3 bracket square plus 16. Okay guys, so this is our first shifting property. Now multiplication by t or multiplication by u. What we do in multiplication by u? We are taking minus 1 raised to 1 single derivative, because here n is a 1, right? So we are taking single derivative of what? 1 upon s plus 3 plus s plus 3 divided by s plus 3 bracket square plus 16. Okay guys, now tell me guys, 1 upon 2, see minus 1 raised to 1 is a minus only, so tell me derivative of this. As we know, derivative of 1 upon 1 s plus 3, we are considering 1 here. जैसे हमने ऑलरेडी एग्जाम्पल्स बहुत सारे देखे, हम यहाँ पे 1 कंसिडर करते हैं. सो 1 इज minus 1 in the numerator and it is increased by 1, so it become a square, plus now tell me what we do here. Can we do u upon v rule? What is the u upon v rule? V square, that is s plus 3 bracket square plus 16 whole square, v square.
Okay guys, now v as it is, that is s plus 3 bracket square plus 16, v as it is into derivative of u. What is the derivative of u? Derivative of u is 1 minus u is as it is, that is s plus 3 is as it is, derivative of v. What is the derivative of v? We are putting 2 in front of s plus 3, right, and it is reduced by 1, so it is 1. It is not necessary to write down, and derivative of s is 1 and 3 is 0, plus 16 derivative is 0. This is our u upon v rule, right? Now I am taking separate page for this. Now see guys, when we shift minus sign inside, so 1 upon 2 is as it is, 1 upon 2 is as it is, right? When we shift minus sign inside, or we put, time being we are putting minus sign outside only, so it is a minus 1 upon s plus 3 bracket square. Okay guys, then plus, tell me what we do here. Can we do एक्सपांशन ऑफ दिस ब्रैकेट? सी, कैन वी डू एक्सपांशन ऑफ दिस ब्रैकेट? अगर मैंने एक्सपांशन किया तो क्या होगा देख लेते हैं. सो इट इज एस स्क्वायर प्लस 2s, सॉरी 6s प्लस 9 प्लस 16 minus, now again in this term again there is expansion, s plus 3 bracket square, so it is again s square plus 6s, right guys, plus 9. Okay, and 2 is outside here, divided by, what is the division? We are putting division as it is, s plus 3 bracket square plus 16 bracket square. Okay, as this is our next term. Now can we take minus sign inside? अगर मैंने माइनस साइन इनसाइड लिया तो क्या होगा? नॉट नेसेसरी टू टेक माइनस साइन इनसाइड, so we are just solve this. Minus sign we are putting outside only, so 1 upon s plus 3 bracket square plus tell me guys, when we are again increase one step, one more step we are going to increase. Tell me 16 plus 9, it is a 25, minus 2 into s square, 2s square, minus 2 into 6, it is a 12s, प्लस सॉरी माइनस 9 इंटू 2 18. क्या किया मैंने यहाँ पे माइनस साइन एंटर किया तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, डिवाइडेड बाय ब्रैकेट इज एज इट इज, s plus 3 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 16 होल स्क्वायर. ओके गाइस, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? वी आर टेकिंग माइनस साइन इनसाइड. अगर माइनस साइन इनसाइड ले ले तो माइनस माइनस प्लस, सो 1 अपॉन s plus 3 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस, टेल मी गाइस, s स्क्वायर, I am taking bracket here, s square minus 2s square, so that is minus s square. So 6s minus 12s, it is a minus 6s. 25 minus 18, it is a minus 7, right? Divided by s plus 3 bracket square plus 16 whole square. Okay guys, now last step. What is the last step? When we take Laplace of integration 0 to t f of u du, what is the last step? We are just putting 1 upon s, right? So I am putting 1 upon s here, 2 is as it is, 1 upon s, and final answer is s plus 3 minus and अगर अंदर एंटर किया तो क्या होगा? So it become s square minus minus plus 6s minus plus 7 divided by s plus 3 bracket square plus 16. ठीक है, so this is our final answer. So I am just taking integration Laplace, so we are putting 1 upon s here. So this is our second numerical based on this topic. Now we move on the next numerical, that is next example is Laplace transform of, this is one more most important example, that is minus 4t 0 to t u sin 3u du. Okay guys, this is again one more most
important example. That example is mostly this type of example is mostly asked in your final exam. So example is very simple. देखो गाइज, अभी तक हमने 6 टाइप्स देख चुके हैं, तो स्टेप बाय स्टेप हम जैसे जैसे आगे गए तो लास्ट में सारे न्यूमेरिकल्स में सारे टाइप्स मिक्स होते गए. जैसे अगर मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया तो यहाँ पे सपोज मैंने sin 3u को f of t एज्यूम किया, तो इट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ t बिकॉज u इज अ t अगेन, so it is the multiplication of t here. Now again there is integration, Laplace of integration again, and there is again first shifting. तो यहाँ पे अगर आपने ऑब्जर्व किया तो स्टेप बाय स्टेप सारे टाइप्स एक साथ मिक्स होके आ रहे हैं, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं. इजीली सॉल्व करना है तो सिंपल, आई एम अज्यूमिंग दैट एफ ऑफ यू, व्हाट इज आवर अजम्पशन, साइन 3u को मैंने अगर अज्यूम किया इट इज एफ ऑफ यू, एंड व्हेन आई एम टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ यू, क्या होगा साइन 3u का, एज वी नो 3 अपॉन एच स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर दैट इज 9, राइट. सो ये सिंपल एग्जांपल है. साइन 3u को मैंने एफ ऑफ यू अज्यूम किया, तो u मल्टीप्लिकेशन बाय टी का मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया. व्हाट इज द मल्टीप्लिकेशन बाय टी, इट इज अ पावर इज सिंगल, सो इट इज अ -1/1 सिंगल डेरिवेटिव 3 अपॉन एच स्क्वायर प्लस 9. Now -1 upon -1/1 is the 1 only, so -1 only, so minus derivative of this, as we know I am putting 3 outside, as we know I am assuming power is 1, so what is the formula is -1 divided by s square plus 9, and again we are applying chain rule because inside term is s square, so what is the chain rule, 2s, again derivative is 2s, right. So minus become plus, so 2 into 3 it is a 6s divided by s square plus 9. Okay, so this is the multiplication by t. Now we move on the next term. What is the next according to you, what is the next property should we apply here? Laplace transform of integration. So I am again applying Laplace transform of integration because they are giving integration 0 to t u f of u. Okay guys, so integration में क्या करते हैं, we are putting only 1 upon s in the phi of s, so our phi of s is this one. ठीक है गाइज, नाउ एस गेट कैंसल, तो आंसर इज 6 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9, एस स्क्वायर प्लस 9. ओके, नाउ again move on the next step. What is the next step, which property we should apply here? Again first shifting. What is the first shifting? Laplace of e raised to minus at इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t u f of u. देखो हमने स्टेप बाय स्टेप किस तरह सॉल्व किया इसको, आपको भी बहुत इजी लगेगा. ये साइन f of u है, तो f of u क्या होगा, हमने ये f of u को साइन u को f of u अज्यूम कर दिया, फिर मल्टीप्लिकेशन बाय t, देन लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन, देन फर्स्ट शिफ्टिंग, सिंपल टर्म. सो व्हाट इज द फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, वी आर रिप्लेसिंग ऑल s बाय s प्लस a. व्हाट इज द a here, a is a 4, right. So replace all the s here, so our answer is 6 upon s plus a, that is s plus 4 square plus 9. ठीक है guys, so 6 upon what is the expansion, s square plus 8s plus 4 square is 16 plus 9 it is a 25. So this is our final answer of whole term, Laplace transform of whole term. So this is our final answer. So ये था अपना लास्ट टॉपिक. अपने अभी आपके पास इतना कॉन्फिडेंस आ चुका होगा कि आप न्यूमेरिकल देख के सॉल्व कर सकते हैं, न्यूमेरिकल देख के आप जज कर सकते हो. जो जहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता था आपका, वहाँ पे मैंने आपको सारे कन्फ्यूजन का डाउट्स बोल दिया है कि किस तरह से कन्फ्यूजन हो सकता है. जैसे मैंने यहाँ पे बोला था 0 to t है, तो ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म इंटीग्रेशन है. आपका इवोल्यूशन में आता है एस टू इन्फिनिटी, राइट, और ये इवोल्यूशन का टर्म आता है एस टू इन्फिनिटी. तो ये अभी आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा. 1 सेकेंड गाइस. तो यहाँ पे 0 to t मतलब ये इवोल्यूशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन है, और इवोल्यूशन में यहाँ पे 0 to इन्फिनिटी पूछा जाता है. ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है. यहाँ पे पावर अपर लिमिट इन्फिनिटी, यहाँ पे अपर लिमिट t है, तो ये बेसिक डिफरेंस है. यहाँ पे आपका कन्फ्यूजन हो सकता है. गाइज ये अपना लास्ट टॉपिक था, और आपके पास कुछ डाउट्स रहेंगे तो ये यू कैन आस्क मी ऑन माई ईमेल और यू कैन कमेंट मी ऑन दिस वीडियो. नाउ मैं एक लास्ट वीडियो बनाने वाला हूँ, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा, जो आपके सारे डाउट्स क्लियर करवा देगा, क्योंकि मैंने इसका पूरा समरी बनाया है लैप्लास का, जिसमें आपको वो वीडियो देख के एग्जैक्टली लैप्लास में जहाँ पे कन्फ्यूजन होगा, या फिर कौन से फॉर्मूले मोस्टली इंपॉर्टेंट है, जो मोस्टली एग्जाम्पल सॉल्व करते टाइम लगने ही वाले हैं, वो एग्जाम्पल बिलोंग्स फ्रॉम द ट्रिग्नोमेट्रिक और बिलोंग्स फ्रॉम द डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन. दैट फार्मूला ऑल वी कवर्ड इन दैट वीडियो. और मैंने सारे टाइप्स के बेसिक
कंसेप्ट या बेसिक सॉल्व करने के स्टेप्स मैंने बोल दिए। तो ये नेक्स्ट वीडियो मेरा बनेगा ऑन दी ओवरव्यू ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो ये वीडियो देख के आपको श्योरली आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म का पूरा आइडिया ले सकते हैं। उसके बाद सिर्फ आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होगी। आई एम श्योर अगर वो वीडियो आपने देख लिया तो योर डाउट शुड बी वेरी क्लियर रिगार्डिंग लैप्लास। वो वीडियो के बाद हम फिर लैप्लास इन्वर्स स्टार्ट करेंगे। आपको कुछ डाउट रहेगा तो ऑलरेडी आई टोल्ड यू, यू कैन कमेंट मी और यू कैन मेल मी। गाइज प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।